Next question. In a hotel, four rooms are available. Six persons are to be accommodated in these four rooms with at least one person and at most two persons per room. Then find the number of all possible ways in which this can be done. Find the number of all possible ways this can be done. तो कभी इसका solution Ni with the number of persons in room Ri for I equal to 1, 2, 3, 4. According to the problem statement, we have the following conditions. So there are four rooms, so R1, R2, R3, R4 are distinct. So there are six persons, P1, P2, P6 are distinct. So each room must have at least one person, Ni greater or equal to lesser or equal to, and each at most two person, Ni less or equal to 2. And for I, at least one, at most two. So the total number of persons in इज अ सिक्स मतलब एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर इक्वल टू सिक्स सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं क्या फोर रूम्स है तो रूम्स आर एक्स आई है ना तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने सिक्स मतलब चार रूम मिल गए कितने सिक्स फ्रॉम कंडीशन थ्री एंड फोर each ni can be 1 or 2 let x be the number of room with one person and y be the number of rooms with the two person since there are four rooms in total so x plus y equal to 4 and ni can only be 1 or 2 so x be the number of rooms with one person and y be the number of person so x plus y equal to 4 क्योंकि total number of rooms है so there are 6 person in total मतलब 1 into x plus 2 into y equal to 6 सही है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है देखो 6 person are accommodated in these four rooms with at least one person and at most two person per room तो वही लिखा है यहाँ पे क्या लिखा देखो x must be x with the number of rooms with one person and y with the number of one with the two person उसके साथ तो x plus y equal to 4 बट 6 पर्सन है मतलब 1 into x plus 2 into y equal to 6 तो सिस्टम क्या बन गया एक x plus y equal to 4 और दूसरा x plus 2y equal to 6 है ना क्योंकि ये टोटल 6 पर्सन के लिए मतलब ये कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पर्सन सही है क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स y लिया ना तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन उसमें 2y आ गया 2 पर्सन के हिसाब से सही है अभी इसको सॉल्व करने के बाद x के आगे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 2 सही है मतलब ऐसे आना चाहिए x इक्वल टू इस y इक्वल टू 2 आया पहले फिर y इक्वल टू 2 इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 तो देखो सो देयर मस्ट बी एक्जैक्टली two rooms with one percentage and exactly two room with a 2%. So we need to calculate the number of ways to accommodate the six persons in the four rooms under this condition. We can break this down into two steps. Step one, we choose room will have one person and which will have two person. So there are four distinct rooms. So we need to choose of them to have a two person. The remaining two rooms will be have a one person. The number of ways is 4c2. 4c2 मतलब 6 4 into 3 1 2 into 1 4c2 का फॉर्मूला है ना 4c2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना so let's assume the moment that we have chosen specific room for example r1 and r2 will have two person each and r3 and r4 will have one person each total हो गया 6 सही है next distribute the six distinct room into this specific assigned room for r1 which will be we have two person and a two person we need to choose two person out of six this can be done in 60c2 मतलब 15 ways 15 ways for room r2 है ना which will have two person we need to choose two person from the remaining four person दो तो निकल गए ऊपर अभी remaining four person कितना 4c2 that is 6 ways अभी कितने निकल गए अभी चार for r3 which will have one person है ना which will have one person we need to choose one person from the remaining two person मतलब two मतलब दो में से एक मतलब two ways for r4 which will have one person we need to choose one person from the remaining one person है ना अभी यहाँ पे जो है सिक्स सिक्स पर्सन में से दो निकल गए बचे चार फिर चार पर्सन में से फिर से इसमें दो निकल गए बचे कितने दो अभी दो पर्सन में से इसमें दो निकल गए है ना मतलब इसमें कितने टू सिक्स टू टू आगे वन पर्सन के लिए फिर ये वन पर ये टू पर्सन के लिए था ना ऊपर टू पर्सन ये वन पर्सन निकल गया टू में से एक गया तो एक बचे तो एक आखिरी अभी पूरे इसका सम तो टोटल नंबर ऑफ इज टू डिस्ट्रीब्यूट द पर्सन फॉर दिस स्पेसिफिक रूम मतलब उसमें अरेंज कर सकते हैं ना आपस में रूम में कौन कौन से अरेंज कर सकते हैं कैपेसिटी असाइन दैट इज r1 r2 to get two person r3 r4 get one person is the product of this combination मतलब 15 into 6 into 2 into मतलब 180 ways since there are six different way to assign the room capacity from step 1 and each such assignment there are 180 ways to distribute the person and total number of all possible ways is the product total ways equal to number of ways to assign capacity of the room into
नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूट द पर्सन ऑफ ईच कैपेसिटी असेल तर नंबर ऑफ वेज देखो 4 into 6 into 180 मतलब ये नंबर ऑफ वेज मतलब ये चूज वन पर्सन 6 एंड नेक्स्ट है मतलब नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट पर्सन ऑफ ईच कैपेसिटी असेल दोनों का प्रोडक्ट कितना गया 1080 सो 1080 इज द फाइनल आंसर क्लियर